رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Inshallah, let's begin 45th session of Golden Stories of Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, and we are on page number 358. They are like cattle. Al-Muthanna said, I have fought against both Arabs and non-Arabs before embracing Islam. In those days, I used to think about 100 non-Arab were harder to beat than 1,000 Arabs. But today I think 100 Arabs outweigh 1,000 non-Arabs. Allah, the Almighty, has changed their state and weakened their plot. Do not be instilled with fear by their appearances, numbers, wide bows, such that the cord was visible from a distance, or long arrows. If they leave this weapon behind when fleeing, or lose them otherwise, they are like cattle. Wherever you wish to drive them, they will obey. Al-Muthanna कहते हैं कि मैंने अरब्स और नॉन अरब्स दोनों के साथ जंग की थी इस्लाम कबूल करने से पहले, और उस जमाने में मैं सोचता था, उन दिनों में मैं सोचता था कि 100 नॉन अरब्स जो हैं वो उनको हराना हार्डर था 1,000 अरब्स के मुकाबले. बट आज मैं सोचता हूँ, यानी दीन इस्लाम कबूल करने के बाद, कि 100 अरब्स जो हैं वो 1,000 नॉन अरब्स के ऊपर भारी पड़ते हैं. अल्लाह अलमाइटी ने जो है ना हालात, जो स्टेट है, उसको चेंज कर दिया है, और इसीलिए अपने दिल में फियर आप नहीं लाए, खौफ नहीं लाए अपीयरेंसेस देखकर, या उनकी तादाद देखकर, या उनके वेपन्स, उनके औजार को देखकर. क्योंकि अगर वो ये इनको आप माइनस कर दो इनके औजार से, तो ये जो है भागेंगे, दौड़ेंगे, और जैसे भेड़ बकरियां होते हैं उसकी तरह हो जाएंगे. तुम जैसे चाहोगे उनको उस डायरेक्शन में लेकर जाओगे और ये तुम्हारी अतात करेंगे. कहने का मकसद ये है कि इट्स ऑल अबाउट द स्टेट ऑफ माइंड. इट इज ऑल अबाउट कि आप किसकी तरफ हैं और कौन आपके साथ है. जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ आप जुड़ जाते हो, तो आप सोचें कि जब आप सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला को अपना दोस्त समझ रहे हैं और उनको प्लीज करने के लिए आपकी भागदौड़ मची हुई है और अल्लाह आपसे राजी है, यू कैन फील हिज कनेक्शन, हिज प्रेजेंस विद यू, तो आपको किसी का भी डर नहीं होता. दुनिया एक तरफ, पूरी की पूरी दुनिया एक तरफ, और आप अकेले, लेकिन आपके अंदर वो डर और खौफ पैदा नहीं होता. दिस इज द स्टेट ऑफ माइंड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. तो ये जो है, इस चीज को हमें ध्यान में रखना है. आज भी ये हमारे लिए लागू है. सारी दुनिया, सारे रिश्ते, सारे कॉन्टैक्ट, सारी पावर, सारा फेम, सारा वेल्थ एक तरफ, और अल्लाह अज़्ज़ा वजल का साथ एक तरफ. तो वो बंदा जो कि फकीर होगा इन टर्म्स ऑफ मनी, मिस्कीन होगा, लेकिन वो इन पावरफुल लोगों के ऊपर भारी पड़ेगा. एंड दैट इज हाउ इट शुड बी, एंड दैट इज हाउ इट इज. तो जिसने अल्लाह को पा लिया, उसने सारे खजानों को पा लिया. Muslim chivalry and magnanimity in returning the daughter of Muqawqis. A noteworthy incident that highlights Muslims' chivalry and magnanimity is that when Bilqis was conquered, they found the daughter of Muqawqis called Armanosa among the inhabitants. She was very dear to her father. She was being forced to marry Constantine, the son of Caesar, against her will. So she had taken refuge in the city along with her lady-in-waiting Barbara. The Muslim army was soon able to take many of her slaves into captivity. Amr gathered his advisors and mentioned to them a verse of the Quran from Surah 55, verse 16. Is there any good for reward other than good? He added, Muqawqis had sent a present to the Prophet ﷺ, and I think we should send his daughter and her female slaves and courtiers back to him, along with any wealth we seized from them. The council agreed to his proposal, and hence Amr set her off to her father honorably with all her belongings, including her retinue and companions. Her lady-in-waiting, Dame Barbara, said to her on the way back, My lady, the Arabs have surrounded us from all sides. Princess Armanosa replied, My life and honor are safer in an Arab tent than in my father's palace. Her father was very pleased to have her back and delighted at the conduct of the Muslims in this regard. एक बार एक ऐसा किस्सा हुआ
جو کہ اصل کردار آف مسلم بتاتا ہے. جب بلبس کانکر ہوئی ایک جگہ ہے، وہاں پر مقوقس کی ایک بیٹی تھی جس کا نام تھا آرمانوسا. وہ اپنے باپ کی بہت چہیتی تھی اور اس کی زبردستی شادی جو ہے وہ کانسٹینٹن جو کہ سیزر کا بیٹا ہے اس کے ساتھ اس کی مرضی کے بغیر فکس کر رہی تھی. تو اس نے ایک جگہ پر، ایک سٹی سے دور ایک جگہ پر ایک لیڈی جو باربرا تھی اس کے ساتھ پناہ لی تھی. اب مسلم آرمی اٹیک کی اس جگہ پر اینڈ دین سب لوگوں کو سلیوز بنا کے کیپٹیوٹی میں لے لیا پرزنر آف وار کی طرح. عمر نے اپنے ایڈوائزرز کو گیدر کیا اور پھر یہ قرآنک ورس انہوں نے ریسائٹ کی جو سورہ نمبر 55 ورس 16 ہے. Is there any reward for good other than good? حل جزاء الاحسان الا الاحسان. یعنی کوئی ریوارڈ ہو سکتا ہے اچھائی کا اچھائی کے بغیر، یعنی اچھائی کا ریوارڈ جو ہے وہ اچھا ہی ہوگا. He added کہ مقوقس جو ہے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے بھیجے تھے، یعنی اس نے ایک اچھے کارڈیل ریلیشن شپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قائم کیے تھے. تو ہمیں اس کی بیٹی اور وہ جو فیمیل سلیوز ہیں اور جو باقی ساتھ میں ان کے کورٹیئرز تھے ان کو واپس بھیج دینا چاہیے. کاؤنسل جو ہے ان کے پروپوزل کو اگری کر گئی اور پھر عمر نے ان کو بڑے عزت سے اپنے ڈیڈ کی طرف بھیج دیے. اب جو یہ ڈیم باربرا تھی اس نے آرمانوسا کو کہا کہ عربز نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا ہے. اس پر پرنسس آرمانوسا کہتی ہے کہ میری زندگی اور عظمت جو ہے، عزت جو ہے وہ عرب کے ٹینٹ کے اندر زیادہ سیف ہے. کس کے مقابلے؟ میرے اپنے باپ کے محل کے مقابلے. فائنلی ان کے جو والد تھے he was very happy to receive her اور وہ بہت خوش ہوئے مسلم کے اس کردار سے، اس اخلاق سے، اس خوبصورت جیسچر سے. یعنی when you are in power، جب آپ پاور میں ہوتے ہو اور آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ کچھ ہرٹ کر سکتے ہو، لوگوں کو سپریس کر سکتے ہو، لیکن you choose to be a better human being for the sake of Allah Azza wa Jal, to expect good from Allah Azza wa Jal. آپ جو ہے اس طریقے کا کوئی قدم اٹھاتے ہو، you forget and forgive, you try to project a good behavior, that is what pleases Allah Azza wa Jal too much. اور وہی ہم نے ادھر دیکھا کہ کس طریقے سے انہوں نے جو کانکرڈ بلبیس ہے اس ایریا میں سے دیکھا جائے تو پرزنر آف وار کی طرح وہ لے کر آ سکتے تھے، بیچ سکتے تھے، ویلتھ بھی سیز کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے مان رکھا. انہوں نے وہ بات ذہن میں رکھی کہ مقوقس نے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ریلیشن شپ اچھے رکھے تھے، ان کو گفٹس بھیجے تھے اینڈ ان کے تعلقات ان کے ساتھ کارڈیل تھے، تو انہوں نے اس چیز کا مان رکھا. اینڈ ویسے بھی یہ لوگ یعنی ماشاءاللہ اتنے سلجھے ہوئے تھے اور اتنی ان کے اندر دین اسلام ان کے روح اور ڈی این اے تک پہنچا ہوا تھا کہ they knew exactly what to do when. پھر بھی انہوں نے کاؤنسل بلایا، صلاح مشورہ کی اور پھر they agreed. They reminded each other with references from قرآن. یہ ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس ایک آیت ریڈی ہوتی ہے which will be so suitable and is good enough to guide them further. تو سبحان اللہ، اس طریقے کا مطالعہ ہمیں چاہیے قرآن کا، اس طریقے سے کنیکشن چاہیے ہمارا قرآن کا کہ ہم جو ہیں ہر سچویشن میں گائیڈنس سیکھ کریں قرآن سے. Conversation between Umar and Hudhaifa radhiyallahu anhu about tribulations and the door about to be broken. Narrated Abu Wail, Hudhaifa radhiyallahu anhu said, Umar radhiyallahu anhu said, who amongst you remembers the statement of Allah's apostle sallallahu alaihi wasallam about afflictions? I said, I know it, as the Prophet sallallahu alaihi wasallam has said it. Umar said, no doubt you are bold. How did he say it? I said, a man's afflictions, wrong deeds concerning his wife, children, and neighbors are expiated by his prayers, charity, and joining good. Umar radhiyallahu anhu said, I did not mean that, but I ask about that affliction which will spread like the waves of the sea. I said, O chief of the believers, you need not be afraid of it, as there is a closed door between you and it. He asked, will the door be broken or opened? I replied, no, it will be broken.
He said, then if it is broken, it will never be closed again. I replied, yes. Then we were afraid to ask what that door was. So we asked Masruq to inquire, and he asked Hudhaifa radiallahu anhu regarding it. Hudhaifa radiallahu anhu said, the door was Umar. We further asked Hudhaifa radiallahu anhu whether Umar radiallahu anhu knew what that door meant. Hudhaifa radiallahu anhu replied in the affirmative and added, he knew it, as one knows that there will be a night before the tomorrow morning. I narrated a hadith that was free from any misstatement. एक बार अबू वाइल नरेट करते हैं कि हुदैफा रदियल्लाहु अन्हु ने कहा, उमर रदियल्लाहु अन्हु ने उनसे कहा था कि आप लोग में से कौन है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो स्टेटमेंट, जो अफ्लिक्शंस हैं, रॉन्ग डेट्स के वजह से जो ट्रायल्स आते हैं, उसके बारे में जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के स्टेटमेंट थे, उसको याद आपको है, वो स्टेटमेंट याद है? तो हुदैफा रदियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मुझे पता है। तो उमर रदियल्लाहु अन्हु ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि तुम बहादुर हो। तो उन्होंने उनसे पूछा क्या कहा था उन्होंने कहा, हुज़ैफा रदियल्लाहु अन्हु ने, कि एक आदमी की जो रॉन्ग डीड्स हैं, उसके अहल को लेकर, वाइफ और बच्चों को लेकर, उसके नेबर्स को लेकर, वो जो गुनाह है उसका कफारा सलाह से, इबादत से, अमल सालिहात से हो जाता है कि वो चैरिटी करे या कोई मारूफ अमल में अपने आप को ज्वाइन करे। उमर रदियल्लाहु अन्हु ने फिर उनसे कहा कि ये वाला नहीं, मैं उस अफ्लिक्शन, उस रॉन्ग डीड की बात कर रहा हूँ जो कि समुंदर की लहरों की तरह फैलेगी। इस पर हुदैफा रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं, ओ चीफ ऑफ द बिलीवर्स के चीफ, आपको इसके बारे में घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक दरवाजा है बीच में इसके जो कि बंद है। फिर उन्होंने पूछा, क्या ये दरवाजा टूटेगा या खुलेगा? तो हुदैफा रदियल्लाहु अन्हु ने कहा कि नहीं, वो टूटेगा। फिर उमर रदियल्लाहु अन्हु ने उनसे पूछा कि अगर ये टूटेगा तो क्या यह फिर से बंद होगा? तो उन्होंने जवाब दिया हाँ। अब जो दूसरे थे वो थोड़े से डर रहे थे कि ये मामला क्या है, क्योंकि ये जो बातें हैं बहुत डीप है और इसके मीनिंग जो है वो डिफरेंट है। यानी ये डोर का मानी क्या है, कौन सा डोर, कौन सा अफ्लिक्शन, लोग थोड़े से कंफ्यूज हैं। बिकॉज ये बात पक्की होती है कि हर एक की लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट होती है। एक पोएट्री, एक प्रोज, एक आर्टिकल, एक लेक्चर हम पढ़ते हैं, हम सुनते हैं, लेकिन डिफरेंट लोगों की अपनी अपनी इंटेलेक्चुअल लेवल, अपनी अपनी नॉलेज के मुताबिक, अपनी अपनी फहम, अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक दे ग्रास्प द पॉइंट्स। तो उसी तरीके से ये बात बिटवीन उमर रदियल्लाहु अन्हु एंड हुज़ैफा रदियल्लाहु अन्हु के बीच में चल रही है। बट जो वो साथ में और लोग थे उनकी समझ में नहीं आ रहा था और वो डर रहे थे पूछने के लिए। तो उन्होंने मसरूक को कहा इंक्वायरी करने के लिए और फिर वो हुज़ैफा रदियल्लाहु अन्हु से पूछे। हुज़ैफा रदियल्लाहु अन्हु ने कहा कि वो जो दरवाजा है वो उमर है। फिर उन्होंने उनसे पूछा, क्या उमर रदियल्लाहु अन्हु को पता है कि वो डोर का मानी क्या है? फिर हुदैफा रदियल्लाहु अन्हु ने रिप्लाई किया कि जी बिल्कुल उन्हें पता है, उन्हें ये अच्छी तरह से पता है, इतनी अच्छी तरह से पता है कि एक रात के बाद दूसरी मॉर्निंग आती है, यानी हम सबको पता है, इट इज यूनिवर्सल फैक्ट। आज रात है तो कल सुबह होगी, कहते इतनी अच्छी तरह से उनको ये बात का पता है। और वो कहते हैं कि मैंने हदीस नरेट किया हूँ जो कि बिल्कुल मिस स्टेटमेंट से फ्री है, यानी कोई गलती, झूठ या मिसिंग नहीं हुई है। इट इज फ्री, यानी वो हसन या सही वाले दर्जे की है, ना ब्रोकन है, ना उसमें झूठ है, ना फैब्रिकेटेड है। We observed that when Hudayfa radiallahu anhu presented the information to Umar radiallahu anhu that an impregnable door prevents the afflictions from flooding over the Muslims and that it will be broken and crashed open, then Umar radiallahu anhu understood it to mean that it will remain open till the final day. This means that trial and tribulations would remain widespread among the Muslims and they will not be able to eradicate or stop them. Hudhaifa radiallahu anhu did not state this on his own account, nor was it his own foresight. He did not have knowledge of the unseen, which only Allah subhanahu wa ta'ala has. It was the Prophet's words which he had heard and memorized verbatim, and that is why he commented,
I narrated a hadith that was free from any misstatement. That is, words which are accurate, true, and do not contain any errors or lies, since they belong to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Umar radiallahu anhu knew the intent of those sacred words, that his caliphate is that impregnable door, and that afflictions would not come to the Muslims during his reign and life. Subhanallah. It breaks my heart when I'm reading this, but that's the fact. पहले हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं, then inshallah we'll discuss on it further to make you understand. अब ये उज़ैफा रदियल्लाहु अन्हु ने बता दिया कि ये जो उन्होंने जो वर्ड्स इन्होंने यूज किए थे, ये अपने तरफ से नहीं थे. ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जो कि फैब्रिकेटेड नहीं है और एक हसन दर्जे की है, सही दर्जे की है. उमर रदियल्लाहु अन्हु जब तक हयात थे, वो एक ऐसा डोर था, एक ऐसी दीवार थी, एक ऐसी ब्लॉकेज थी, जो कि इस तरीके की ट्रायल्स एंड अफ्लिक्शंस, जो बैड डीड्स और रॉन्ग डीड्स थे, उसको रोकने के लिए काफी थी. सुभान अल्लाह. और ये एक ऐसा डोर था जो कि अगर ब्रेक हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा, फिर उसके बाद वो खुला रहेगा अंटिल यौमिल आखिरा. इसका मानी ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस जो है, मुस्लिम्स के ऊपर जो आजमाइश है, वो कंटिन्यूसली फ्लो इन करेगी. अब ये जो है, इस मैटर का वेटेज इतना ही काफी है कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वर्डिंग्स हैं. ये हुज़ैफा रदियल्लाहु अन्हु के या उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु के वर्डिंग्स नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वर्डिंग्स हैं, व्हिच मींस ये हक है, ये ट्रुथ है, ये फैक्ट है, और ये हम महसूस भी करते हैं. सुभान अल्लाह. एंड ये इंपॉर्टेंस बताती है एक खलीफा की, एक लीडर की, एक ऐसे लीडर की, ऐसे मुस्लिम मोमिन की, ऐसे स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की, कि जिसके होते हुए, जिसकी खलीफत के अंडर, जिसकी शेड के अंडर मुस्लिम उम्मा वाज सो सेफ एंड प्रोटेक्टेड. वो एक हाथ में छड़ी का होना और हर चीज के अंदर डिटेल में चेकिंग करना, इंक्वायरी करना, गौर फिक्र करना, अपने आप को इन्वॉल्व करना, ये कितना बड़ा रोल था उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु का, कि उनके होते हुए सुभान अल्लाह पूरी की पूरी उम्मत जो थी वो सेफ थी. अब जैसे ही ये डोर, ये दरवाजा क्रैश होके टूट गया, तो वो जो उस टाइप का सेकंड दरवाजा फिर नहीं बना, उस टाइप का प्रोटेक्शन मुस्लिम उम्मत के पास फिर नहीं आ सकी, यौमिल आखिरा तक नहीं आएगी. एंड दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर ऑल ऑफ अस. जैसे अभी हम अगर इसको रिलेट करने जाएं, कि हम सब इस चीज को अच्छे से महसूस कर सकते हैं. जैसे हमारे महरम होते हैं, ओके, जब हमारी शादी नहीं होती है, हमारे वालिद, हमारे फादर, हत्ता कि वो हमारे साथ ज्यादा टाइम दिन भर ना बिताएं, वो हमारी चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व भी नहीं होते, लेकिन एक फादर होता है ना जब, तो एक अलग किस्म की पावर रहती है. जब हम बाहर जाते हैं, मार्केट में जा रहे हैं, हमारे साथ हमारे महरम होते हैं, फॉर एग्जाम्पल योर ब्रदर विथ यू, एक अलग किस्म की प्रोटेक्शन आपको फील होती है. जब आपकी शादी होती है, आपका हस्बैंड, चाहे वो कैसा भी हो, कुछ भी हो, उसकी चप्पल बाहर होगी ना, घर के बाहर रखी होगी, एक पावर महसूस होती है, एक प्रोटेक्शन महसूस होती है. और इस प्रोटेक्शन की कदर पता है कब होती है? जब ये हमसे छीन ली जाती है. एंड बिलीव मी, वी एज अ वुमन, हमें ये सारी हमारी जो छतरी है ना, ये जो प्रोटेक्शन है, ये जो डोर है, ये जो वॉल है, जिस तरीके से महरम को हमारे इर्द गिर्द अल्लाह ताला ने प्रोटेक्शन के लिए रखा है, इसकी कदर करना सीखें. बिकॉज इसकी कदर, जैसे मैंने आपको बताया ना, कि जब छीन ली जाती है ना, तब होती है. आस्क समवन हु हैज रिसेंटली लॉस्ट अ फादर, और आस्क अ वुमन हु हैज रिसेंटली लॉस्ट हर हस्बैंड और हर ब्रदर. इसकी कदर तब होती है जब आपको वो धूप और धूल और मिट्टी और लोगों की आंखें और लोगों के तेवर आपको जब महसूस होते हैं, चुभने लगते हैं, तब इसकी कदर होती है. सो जो भी प्रोटेक्शन, जो भी वॉल, जो भी रूफ, जो भी दरवाजा अल्लाह ताला ने आपको दिया है, उसकी कदर करें. जो आपका रोल है एज अ राइट, एज योर ड्यूटी, उसको अदा करें. राइट्स भी क्लेम करें और अपनी ड्यूटीज भी अदा करें, खिदमत करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें. सबसे ज्यादा अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपके लिए, आपके मांगने से पहले ये चीजें आपकी तरफ फैसिलिटेट की है. एंड जिन लोगों के पास ये नहीं है या जिन्होंने इसको खो दिया है, उनसे उसकी कदर पूछें.
poor people going to wealthy people. Umar radiallahu anhu would say, whoever goes to the ruler upon his return, his opinion concerning Allah will be changed. The going of poor people to wealthy people is a cause for affliction. If anyone has 10 habits, 9 being virtuous and 1 being bad, then that bad habit will overcome the 9 virtuous one. If that 10th habit is ill conduct with others, then it will destroy all the rest of his habits. उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते थे, कोई भी आदमी जो कि एक रूलर के पास जाते हैं उसकी रिटर्न के बाद, तो उसकी ओपिनियन अबाउट अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो चेंज हो जाएगी। जो गरीब लोग अमीर लोगों के पास जाते हैं, ये अफ्लिक्शन का कॉज है, यानी ये रॉन्ग डीड्स का जो है ये वजह बनती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के पास 10 आदतें हों, 9 आदतें उसकी बड़ी अच्छी नेक वाली हैं और एक आखिरी जो 10वीं आदत है वो बुरी हैबिट है, कुछ बुरी आदत है, तो वो बुरी हैबिट जो है वो सारे 9 को खराब करने के लिए काफी है। और अगर वो 10th हैबिट जो है बुरा बर्ताव है, दूसरों के साथ बुरा बर्ताव है, तो वो सारी की सारी 9 की 9 अच्छाइयों को टोटली डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी है। हमारे लिए ये लेसन है कि हमें जो है ना कोशिश ये करनी है कि हम अपनी नेकियों को कलेक्ट करके रखें और अपनी वो एक बुरी आदत या अपनी वो एक बुरे इखलाक या वो अपनी एक बुरी हरकत से हम हमारे दूध का जो हमने ग्लास भर के रखा है उसके अंदर एक नजासा ना डालें। हमें ये कोशिश करनी है कि हमारी नेकियों की बकेट के अंदर हम खुद होल ना करें, बिकॉज दैट इज व्हाट शैतान वांट्स अस टू डू। खूब सारी बड़ी बड़ी नेकियां और फिर एक ऐसा गुनाह जो कि सब चीज को जाया कर दे, एक स्ट्रैंड ऑफ शो ऑफ रियाकारी आ जाए, शिरक आ जाए, बिदा आ जाए, देन यू आर गॉन। सो वी हैव टू कंटिन्यूअसली, हमें कोशिश ये करनी है कि हमने नेकियां तो कमानी है इंशाल्लाह ताला, अल्लाह उसको कबूल करे, और फिर उसको सेफगार्ड भी करना है, क्योंकि अगर हम उसे सेफगार्ड नहीं कर पाते तो वो एज गुड एज नॉट डूइंग इट हो जाता है, क्योंकि फिर आपने क्या जमा किया, फिर आपने क्या कलेक्ट किया। आपको सेफगार्ड करना है, कंटिन्यूअसली अपने आप पे वर्क करना है, और ये नहीं सोचना है, अपने दिमाग में ये ख्याल नहीं लाना है कि इतना सारा मैंने अच्छाई किया, एक दो बुराई कर दिया तो इट्स नॉट अ बिग डील, ये चलता है, दुनिया करती है, ये होता है। एटीट्यूड टोटली रॉन्ग है। तो उस पे आप वर्क करें अपने आप पर, कि कोशिश करें कि you constantly work on yourself and get 10 on 10, inshallah. And it is possible. It is nothing that is not possible. दुआ करते रहें, संभल के चलते रहें, acknowledge करते रहें what you are doing and what you are not able to do. But you have to safeguard. Al-Faruq asked Saad to send a delegation to debate the Persian king. Umar said in one of his letters to Saad, don't be distressed due to the information you get about them, nor due to intransigence. Seek Allah's help and put your trust in Him. Send to Him the Persian king, men who are insightful, wise, and patient, who should call him towards Allah the Almighty. Allah the Almighty will weaken them through this call and make it a precursor of victory over them. एक बार उमर रदियल्लाहु अन्हु ने एक अपने खत जो उन्होंने साद को लिखा था उसमें लिखा कि दुखी ना हो, परेशान ना हो, तुमको कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है, अल्लाह की मदद, अल्लाह के ऊपर तवक्कुल, और सेंड टू हिम, उन्होंने कहा कि पर्शियन आदमी जो हैं जिनके अंदर अच्छी सेंस है, इंटेलेक्चुअल है, वो हिकमत वाले हैं, सब्र वाले हैं, उनको भी जो है अल्लाह की तरफ मोड़े। अल्लाह जो है उनको कमजोर कर देंगे और फिर फाइनली इंशाल्लाह तुम्हारी विक्ट्री हो जाएगी उनके ऊपर। Besides, Umar asked Saad to write a report to him every day. उनसे फिर उन्होंने ये भी कहा कि रोज जो है एक रिपोर्ट के तौर से उमर रदियल्लाहु अन्हु को लिखकर रिपोर्टिंग अपनी बताते जाएं। Saad
began gathering wise, intelligent, and forbearing men for the task. The men who were chosen for their insight, intelligence, and nobility were the following. अभी जिस तरीके से गाइडलाइंस दी उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु ने साद को कि ऐसे बंदे जमा करो जिनके अंदर इंटेलेक्चुअल लेवल हो, जिनमें हिकमत हो, जिनमें सब्र हो, तो उन ऐसे बंदों को ढूंढकर उन्होंने तकरीबन 7 लोगों को इकट्ठा किया। वो लिस्ट किसकी थी? अन्नुमान बिन मुकारिन अल-मुज़ैनी, बुसर बिन अबी रुहम अल-जुहानी, हमला बिन जुवैया अल-कनानी, हंजला बिन अबी रबी अत-तमीमी, फुरत बिन हयान अल-अजली, आदि बिन सुहैल, अल-मुगीरा बिन जुरारा बिन अल-नबाश बिन हबीब। ये 7 लोगों को इकट्ठा किया साद रदियल्लाहु अन्हु ने। He also chose other men due to their dignified, imposing personalities and well-proportioned muscular constitution. This, along with their deep insight, made them integral members of the delegation. They were, इन 7 के अलावा साद रदियल्लाहु अन्हु ने दूसरे भी आदमियों को सिलेक्ट किया, another 7, जो कि बहुत डिग्निफाइड थे, उनकी पर्सनालिटीज भी बहुत अच्छी थी और वो फिजिकली बहुत वेल प्रोपोर्शनेट और मस्कुलर थे। ये कौन थे? ये थे उतारिद बिन हाजिब अल तमीमी, अल अशाफ बिन कैस अल किंदी, अल हारिथ बिन हसन अल सुहली, आसिम बिन अमर अल तमीमी, अमर बिन मादी करब अल जुबैदी, अल मुगीरा बिन शोबा अल थकाफी, अल मुसन्ना बिन हारिथा अल शैबानी। तो ये तकरीबन 14 लोग थे जो साद ने कलेक्ट किए। Hence, the delegation consisted of 14 people whom Sa'ad sent to the Persian king. They were the cream of his army, as Umar radiallahu anhu had wished. This would have enabled them to call King Yazdijerd to Islam with wisdom, appropriate words, and convincing arguments, with the hope that Allah the Almighty may guide him and his army to Islam, and hence bloodshed would be avoided. अभी ये 14 आदमियों का डेलीगेशन बना और साद रदियल्लाहु अन्हु ने इनको डायरेक्ट किया पर्शियन किंग की तरफ। ये उनकी कोशिश थी कि जंग को अवॉइड किया जाए, उनको दीन की दावत दी जाए और जो वो किंग यज़दजर्द थे उनको इस्लाम की तरफ माइल किया जाए, हिकमत के साथ, अच्छी तरह से कन्विंसिंग वर्ड्स के साथ, अच्छी आर्गुमेंट्स के साथ, इस उम्मीद से कि अल्लाह उनको हिदायत दे और उनकी आर्मी को भी, तो इससे बहुत ज्यादा खून खराबा जो है वो अवॉइड हो जाएगा। This delegation consisted of extremely competent men. ये जो लोग थे 14, ये इनकी आर्मी के क्रीम लोग थे और ये बहुत माहिर थे ऐसे डिफिकल्ट टास्क को हैंडल करने के लिए। Besides having imposing personalities, wisdom, and insight, they had the added advantages of having enough previous experience with dealing with the Persians. Some of them had faced the Persians in combat in previous wars, and others had been part of delegations to the Persian courts in pre-Islamic days, while some knew the Persian language. ये सारी पॉजिटिव क्वालिटीज होने के साथ साथ हिकमत, अच्छी पर्सनालिटी, इनसाइट, इंटेलेक्चुअल लेवल, इनके पास तजुर्बा था पर्शियंस को डील करने का। काफी सारे लोग पहले पर्शियंस के साथ बाकायदा जंग करके उनके साथ कॉम्बैट कर चुके थे और इनको इनके पर्शियन के तौर तरीके कोर्ट्स के भी पता थे और काफियों को पर्शियन लैंग्वेज भी आती थी। It was as if Sa'ad chose every one of them, having tested them on several levels, technically for their competence and thoroughness, and physically for their bodily strength and competence. Hence, the delegation inspired both awe and admiration at the same time due to their imposing personas, forbearance, and intelligence. ऐसा था कि एक एक आदमी को जैसे कि टेस्ट किया गया था, टेक्निकली उनकी कॉम्पिटेंस क्या थी, कितने थरो हैं, जिस्मानी लिहाज से वो कितने स्ट्रांग है, और ये जो पूरी की पूरी टीम थी ये बहुत एडमायर्ड थी और एक अलग किस्म का ग्रुप था जो बहुत इम्प्रेसिव पर्सनालिटी थी, जिसे हम कहते हैं ना ब्यूटी विद ब्रेन टाइप, समथिंग व्हिच वाज अ कंप्लीट पैकेज। फिजिकली भी वो लोग बहुत ताकतवर थे और दिमागी लिहाज से भी बहुत इंटेलिजेंट थे और एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स। This noble mission, which was led by An-Numan bin Muqarrin, finally reached Al-Madain and was ushered into the royal court of
यजिद का। अब ये जो नोबल मिशन था, इसके लीडर कौन थे? अन्नुमान बिन मुकर्रिम। ये पहुंचा अलमदियान, वहां पर इमीडिएटली इनको रॉयल कोर्ट में भेजा गया। He asked through his interpreter, "What brings you here and what made you fight us and invade our lands? Is it because we were preoccupied with the internal power struggle in the Persian court that you decided to avail the opportunity?" अब वो इंटरप्रेटर के जरिए बात चल रही है, वो उनको पूछ रहे, आपको यहाँ पर क्या चीज ले आई है और आप लोगों ने हमारे साथ फाइट क्यों किया, क्यों हमारी लैंड्स को इन्वेड किया? इसलिए कि हम लोग आपस में अपने स्ट्रगल कर रहे थे, हम उसमें बिजी थे, तो आपने सोचा कि आप अपॉर्चुनिटी इसका फायदा उठाएं, मौके का फायदा उठाएं। An-Numan said to his companions, "If you wish, I will talk, but if someone else wants to volunteer, I would put him forward." An-Numan ने अपने साथियों से पूछा कि अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बोलूं, अगर कोई और वॉलंटियरली बोलना चाहता है तो वो पहले बोल लें। तो उन्होंने कहा नहीं, आप बोलें। तो अन-नुमान ने बातचीत करना शुरू किया, रिप्लाई दिया उन्होंने। Allah the Almighty had mercy on us and sent to us a prophet who commanded us to do good deeds and forbade us from evil. Allah the Almighty has promised us rewards in this life and the hereafter if we respond to his messenger's call. His call reached all the tribes until there became a group from each tribe who drew closer to him and a group that forsook him. Then he ordered us to start with those Arabs who opposed him, and we complied. Those Arabs came under his authority, either by force, for which he was thankful to Allah the Almighty, or those who obeyed him of their free will, and these increased in numbers. All of us witnessed the nobility of his mission by the elimination of enmity and tension that plagued us. खूबसूरती से स्टार्ट किए अन्नुमान ने कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने हमारे ऊपर मेहरबानी की, रहम दिया। किस तरीके से? हमें एक प्रॉफिट देकर। और वो नबी ने हमें क्या सिखाया? हमें उन्होंने कमांड दिया कि हम अच्छे अमल करें और बुरे अमलों से बचें। उसको हमारे लिए ममनू कर दिया। फिर अल्लाह सुब्हान ताला ने हमें प्रॉमिस किया जज़ा का, इस दुनिया में और आखिरा में, अगर हम हमारे रसूल के कॉल को फॉलो करते हैं तो। और उनका जो कॉल था, उनका जो दावा था, वो गया हर ट्राइब्स के पास। उसमें से चंद लोग जो हैं उन्होंने कबूल किया, चंद लोग नहीं राजी हुए। और फिर धीरे धीरे उन अरब्स के पास हम जाने शुरू हो गए जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपोज किया। कुछ बाय फोर्स इसमें दाखिल हुए और कुछ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अपनी मर्जी से, फ्री विल से दाखिल हो गए। धीरे धीरे एनी हाउ द नंबर इंक्रीज्ड, और हमने देखा कि ये जो नोबल मिशन था वो किस तरीके से फैलता गया, दुश्मनों का खात्मा होते गया और जो टेंशन था वो खत्म होते गया। Then the Prophet sallallahu alaihi wasallam asked us to start with those nations which border us. फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हुक्म दिया कि उन मुल्कों से शुरू करो जो हमारे बॉर्डर्स पे लगते हैं और उनके साथ फिर जस्टिस करा जाए, अदल किया जाए। Thus we call you to our religion. It is a religion that tells us about good things and their benefits and tells us about the evil of all bad things. If you reject this call, then we offer you something that is harsh but not worse than the option you will be left with if you reject it. वो कहते हैं कि जब भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे कहा कि वो बॉर्डर वाले नेशन से उनके तरफ जाके अब उनको दावा दो, उनको कॉल करो, उनको टच करो, तो उस लिहाज से हम आपकी तरफ आए हैं और हम अपने दीन में इस्लाम की तरफ आपको दावत देते हैं। ये वो दीन है जो आपको अच्छी चीजें करने के लिए एनकरेज करता है, जो आपके लिए फायदेमंद है और आपको बुरी चीजों से रोकता है। अगर आप इसको रिजेक्ट करते हो तो हम आपको एक सख्त चीज ऑफर करेंगे, लेकिन अगर आप इसको ऑप्शन को नहीं मानते हो तो फिर कुछ बुरा हो जाएगा और वो जो होगा वो वर्स्ट है अगर आप इसको रिजेक्ट करते हो। दो सूरत हाल हैं, अगर आप इसको कबूल कर लेते हो तो नथिंग, नो प्रॉब्लम एट ऑल, लेकिन आप अगर नहीं मानते हो तो दूसरा एक ऑप्शन क्या है कि आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, जिजिया।
اگر آپ جزیہ پے کرنے کو راضی نہیں ہوتے ہو تو ہم آپ کے ساتھ پھر جنگ کریں گے. اگر آپ ہمارا ریلیجن ایکسیپٹ کرتے ہو تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو قانون ہیں وہ آپ پہ لاگو ہو جاتے ہیں اور جو لاز ہیں وہ اکارڈنگلی اپلیکیبل ہوں گے اور پھر ہم ریٹرن ہو جائیں گے اور ہم آپ کے معاملات میں آپ کے جو افیئرز اور لینڈ کے معاملات ہیں اس میں ہم دخل نہیں کریں گے. اگر آپ ٹیکس پے کرنے کے لیے راضی ہوتے ہو تو وہ ہم آپ سے ایکسیپٹ کر لیں گے اور کوئی اور اگر آپ کو انویٹ کرے یا پریشان کرنے کی کوشش کرے تو اس سے بھی ہم آپ کو ڈیفینڈ کریں گے. اگر آپ اس چیز کو بھی راضی نہیں ہوتے ہو ان آپشنز کو ساروں کو تو پھر ہم آپ کے ساتھ جنگ کریں گے. یعنی سارے کے سارے آپشنز انہوں نے بتا دیے کہ ہم آپ کو دین اسلام جو کہ خیر ہے اس کی دعوت دیتے ہیں, آپ قبول کر لو تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. دین آپ اپنے جو حکم ہے اللہ کا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا, اس طریقے سے آپ اپنے افیئرس کو رن کرو. اگر آپ نہیں مانتے ہو تو پھر جزیہ پے کرو. جزیہ آپ پے کرو گے تو ہماری طرف سے آپ کو پروٹیکشن ملے گی. اگر آپ یہ ساری کوئی بھی چیزوں کو نہیں مانتے, ریجیکٹ کرتے ہو تو پھر کیا ہوگا, پھر ہم آپ کے ساتھ جنگ کریں گے. Yazid said, I did not know any nation on the face of the earth to be more wretched, less numerous, and more disunited than you. We merely used to let you have some suburban villages, and that alone used to spare us any worry from you. Do not stand up to Persia. If you are in any delusion about us, set it aside. If it is poverty that drives you, we will make you plentiful, honor you, clothe you, and appoint a kind and a compassionate person to govern you. At this, Al-Mughira bin Shu'bah stood up. Whatever you have mentioned of our inglorious past is correct, or it was worse than you think. He described the wretched lifestyles of Arabs before Islam in detail, and how Allah the Almighty blessed them by sending His messenger to them in a manner similar to Numan's speech. Then he added, either choose to pay jizya willingly and live a life under subjugation or face the sword. Better still, save yourself and accept Islam. ابھی وہ راجا کیا ریپلائی کر رہا ہے, وہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کوئی اور نیشن ہے اس ارتھ پہ جو کہ اتنا خراب, اتنا اس میں فرق ہو, اتنے وہ لوگ ڈس یونائٹیڈ ہو جیسے کہ آپ لوگ. ہم لوگوں نے آپ لوگوں کو چھوٹے چھوٹے سبربن ولیجز کو فتح کرنے کے لیے الاؤ کیا اور اس سے ہمیں کوئی پریشانی بھی نہیں ہوئی. پرشیا کے اگینسٹ کھڑے نہیں ہونا. آپ جو ہیں ڈیلیوڈڈ ہو, یعنی آپ کو کچھ وہم ہو رہا ہے. اگر غریبی یا غربت آپ لوگوں کو پریشان کرتی ہے تو پریشان نہ ہو, ہم لوگ آپ کو کچھ چیریٹی وغیرہ دے دیں گے, آپ کو آنر بھی کریں گے, عزت بھی دیں گے, کپڑے بھی دیں گے, اور آپ کے اوپر ایک بہت نرم دل گورنر بھی رکھ دیں گے. اب یہ جو ہے آپ دیکھیں اس کی بات کے اندر کتنا ایروگنس ہے, لیکن واٹ ہی از ٹاکنگ دور جاہلیت کی بات کو کر رہا ہے, عربس کی. ہی از رائٹ. اس پر المغیرہ بن شعبہ کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا کہ آپ نے جو کچھ بھی کہا ہے ہمارا انگلوریس پاسٹ, ہمارے پاسٹ کے بارے میں, وہ کریکٹ ہے. ہم اس بری حالت میں تھے اور شاید اس سے زیادہ خراب تھے جتنا آپ نے ایکسپلین کیا. لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں رسول سے نوازا اور پھر جب ہماری لائف اور زندگی ٹرن ہوئی, جب معاملات سارے ٹرن ہوئے, اور پھر انہوں نے چند باتیں سیم نعمان رضی اللہ عنہ کی طرح کہی, پھر آخر میں انہوں نے ایڈ کیا یا تو آپ جزیہ اپنی مرضی سے پے کرو, ٹھیک ہے, یا پھر ہماری تلواروں کا مقابلہ کرو. اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بچاؤ, اچھی طرح سے بچاؤ اور دین اسلام قبول کر لو. Yazid retorted, had it not been a norm not to kill ambassadors, I would have slain you all. I do not have anything for you. Then he called for a heavy vessel filled with soil to be brought and thundered, make their most noble man carry it, then drive them out of the gate of Al-Madain. Asim bin Amr stood up and said, I am the most noble among them. He took the vessel, carried it to his mount, and placed it on the animal. When Asim arrived back at his garrison, he said to Sa'ad, glad tidings. By Allah, Yazid has given us the keys of his kingdom. اب یہ المغیرہ بن شعبہ جب انہوں نے بھی سیم باتیں کی اور ڈائریکٹلی اس کو بھی وارن کیا,
تو یزدگرد جو ہے وہ پھر بھی راضی نہیں تھا. وہ کہتا ہے اگر یہ طریقہ کار نہیں ہوتا کہ ایمبیسڈرز کو قتل نہیں کرنا چاہیے, ان کا وہ ایک رول تھی, ایک نارم تھا, تو کہتے اگر یہ قانون نہیں ہوتا تو میں آپ لوگ سب کو قتل کر دیتا, میرے پاس آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. پھر اس نے ایک ہیوی ویسل منگایا, اس کے اندر مٹی ڈلوائی, اور پھر کہا کہ ان میں سے جو سب سے نوبل ہے وہ اس کو اٹھا کے لے کر جائیں اور ان کو گیٹ کے باہر المدین کے گیٹ کے باہر لے جائیں. عاصم بن عمر جو ہے وہ کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا میں سب سے نوبل ہوں ان لوگوں میں. انہوں نے وہ ویسل جس میں مٹی تھی وہ پکڑا اور اپنے اینیمل پہ ماؤنٹ کیا اور پھر نکلے. اور جب عاصم ارائیو کیے تو انہوں نے سعد کو کہا خوشخبری, واللہ یزدگرد نے ہمیں جو ہے اپنی کنگڈم, اپنے ملک کی چابیاں دے دی ہیں. ٹائم ٹو تھنک, کنٹمپلیٹ اگین. یہ اسٹوری میں ہم نے دیکھا ایک تو یہ لیسنس واٹ وی لرن, ہاؤ دا سینئر گائیڈز دا جونیئر, کس طریقے سے سینئر جو ہے اپنے جونیئر کو گائیڈ کرتے ہیں, جہاں کہیں پہ کوئی ڈیفیکلٹی آتی ہے, کچھ آتی ہے, تو ایکسپیرینس کے حساب سے کس طریقے سے گائیڈ کرتے ہیں. انہوں نے اپنی ٹیم بنائی, سعد رضی اللہ عنہ نے اپنی ٹیم, ہی فالوڈ دا انسٹرکشنز, اور بہترین اپنی ایک ٹیم بنائی ڈیلیگیٹس کی پرشین کنگ کے پاس بھیجنے کے لیے. رائٹ مین فار دا رائٹ جاب, لائق لوگ, اسکلفل ٹیلنٹڈ لوگوں کی ہمیشہ ڈیمانڈ رہتی ہے. We have to make ourselves skillful, we have to make ourselves productive, we have to make ourselves useful. اس کے بعد جس طریقے سے انہوں نے یہ پورا جو پروجیکٹ یا ٹاسک تھا کتنی خوبصورتی سے لے کر چلے, طریقے سے لے کر چلے, ان کے ورڈز, ان کے کلمات, ان کا طریقہ کار خوبصورت, بیوٹیفل, اللہ کی حمد و ثنا, بات ایک دم کلیئر طریقے سے, آپشنز دیے انہوں نے, سیدھی سیدھی بات, گول گول نہیں, نو بیٹنگ اراؤنڈ دا بشز, نو اننیسیسری ایپل پالشنگ, نتھنگ, سبحان اللہ. اور اپنی بات کر کے وہ لوٹے, نہ تو کوئی خون خرابہ, نہ تو کوئی پریشانی, نہ تو کوئی ان ایکسپیکٹڈ ایشوز فردر جو معاملے کو خراب کریں. Something that we have to bring in our lives. ہم لوگ جو ہے نا نارمل چیزوں کو بھی بہت کمپلیکیٹ کر جاتے ہیں, یعنی اتنا کمپلیکیٹ کر جاتے ہیں کئی بار کہ سمجھنے لگتی ہے کہ ہمیں ہمارا دین اسلام جو ہے وہ سمپل ہے اور وہ چیزوں کو سمپلیفائی کرتا ہے ہمارے لیے, لیکن ہم اس کو اتنا کمپلیکیٹ کیوں کر جاتے ہیں. اینڈ وی ہیو ٹو میک فیو تھنگس, few changes in our thought process. آج ایک بہت پیارا آرٹیکل سسٹر حسنہ نے شیئر کیا تھا, میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ ریڈ کرنا چاہتی ہوں. It was a beautiful, thought-provoking, very deep. I don't know if Sister Husna is there with us today. No, she's not here. Anyways, یہ ایک موم کی کہانی ہے, ایک جنرل نارمل موم کی کہانی. یہ سوتی نہیں ہے, ایگزاسٹڈ فیل کرتی ہے, اریٹیٹڈ رہتی ہے, گرمپی رہتی ہے, کڑوی رہتی ہے, بیمار رہتی ہے. اینڈ دین سڈنلی ایک دن وہ چینج ہو جاتی ہے. کیسے چینج ہوتی ہے اور اس کی لائف میں ہوتا کیا ہے. ڈیڈ جو ہے وہ آ کے موم کو کہہ رہے ہیں, یعنی وہ لیڈی کا جو ہسبینڈ ہے وہ کہتا ہے کہ میں جاب ڈھونڈ رہا ہوں 3 مہینے سے, مجھے نہیں ملی, میں اپنے فرینڈس کے ساتھ جا رہا ہوں انجوائے کرنے کے لیے. تو یہ وائف ریپلائی کرتی ہے ٹھیک ہے, اٹس اوکے. بھائی آتا ہے جو کہ ان کا بیٹا ہے اس لیڈی کا, وہ کہتا ہے میں یونیورسٹی میں بہت بہت گندے مارکس میں نے لائے ہیں. تو یہ مدر کہتی ہے نو پرابلم, تم ریکور کر لو گے, اور اگر ٹھیک نہیں ہوا تو تم ریپیٹ کر لینا, بٹ اپنی ٹیوشن کی فیس خود ہی پے کرنا. پھر یہ بیٹی آتی ہے کہ موم میں نے اپنی کار جو ہے ایکسیڈنٹ کروا دی, یعنی ایکسیڈنٹ ہو گیا میرا. تو موم ریپلائی کرتی ہے ٹھیک ہے, کار کو شاپ میں لے جاؤ, فکس کرو, اور پتا کرو کہ کیسے تم اس کے بلز پے کرو گی, اس کے بارے میں غور فکر کرو, اور تب تک کہ تم بس اور پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کرو. پھر بہو آتی ہے,
یہ عورت کی کہتی ہے میں آپ کے ساتھ کچھ مہینے گزارنا چاہتی ہوں. تو پھر سے یہ مدر کہتی ہے نو پرابلم کچھ منتھ آپ رہو ہمارے ساتھ, لیونگ روم میں اپنی جگہ دیکھو کہاں پر اپنے آپ کو سیٹل کر سکتے ہو, اور کبرڈ میں سے بلینکٹس اپنے لیے نکال دو. اور سارے کے سارے اکٹھے ہوئے. موم کے ریئیکشنز کے بعد وہ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہے, ایسا چینج کیسے آیا, کیا وہ کسی ڈاکٹر کے پاس گئی ہیں یا ان کو دوائیاں کچھ دی گئی ہیں, شی از انڈر سم پل, سم میڈیکیشن, سم تھراپی, کچھ اوور ڈوز ہو گیا ہے, کیا ہوا ہے. تو پھر وہ مدر کے پاس, یہ لیڈی کے پاس گیدر ہوتے ہیں. وہ کہتی ہیں کہ مجھے بہت ٹائم لگا یہ ریئلائز کرنے کے لیے کہ ہر ایک آدمی جو ہے وہ اپنے لیے رسپانسبل ہے, اپنی لائف کے لیے. مجھے سالوں لگ گئے یہ ڈسکور کرنے کے لیے کہ میری پریشانی, میرا اینزائٹی, میرا ڈپریشن, میری ہمت, میری انسومنیا, میرا سٹریس, یہ سارے پرابلمس کو سالو نہیں کر سکتی, لیکن یہ مجھے پرابلمس میں ڈال سکتی ہیں. میں رسپانسبل نہیں ہوں آپ لوگوں کے ایکشنز کے لیے, نہ کسی کے بھی ایکشن کے لیے. میرا جاب نہیں ہے کہ میں کسی کو خوشیاں دوں, میں صرف میرے ایکشنز کی رسپانسبلٹی رکھتی ہوں اور میں صرف اپنے آپ کو ہی ایکسپریس کر سکتی ہوں. اور اسی لیے میں نے ابھی اپنی ایک ڈیوٹی بنا لی ہے کہ میں سکون اور کام رہوں گی. ہر کسی کی جو بھی پرابلم ہے وہ خود سالو کریں گے. کہتے ہیں میں نے ڈفرینٹ کورسز لیے, ڈفرینٹ ڈیولپمنٹل کورسز, مینٹل ہائیجین, وائبریشن, بہت کچھ میں نے سیکھا. سب جگہ پر گھما پھرا کے ایک ہی بات آتی ہے کہ میں صرف اپنے آپ کو, اپنی فیلنگز کو کنٹرول کر سکتی ہوں. آپ لوگوں کے پاس سب کچھ وہ موجود ہے جس سے کہ آپ اپنے پرابلم سالو کر سکتے ہیں, چاہے کتنا بھی ٹف ہو. میرا کام ہے آپ لوگوں کے لیے دعا کرنا, آپ لوگوں کو پیار دینا, آپ لوگوں کو ہمت دینا, لیکن یہ آپ لوگوں کا کام ہے کہ آپ اپنے پرابلمس کو سالو کرو اور اپنی خوشیاں تلاشو. میں آپ کو رائے دے سکتی ہوں, لیکن یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو فالو کرو یا نہ کرو. تو آج سے میں آپ لوگوں کی رسپانسبلٹیز لینے والی نہیں بنوں گی. میں اپنے اوپر کوئی بھی گلٹی فیلنگ نہیں رکھوں گی. آپ لوگوں کی غلطیاں, آپ لوگوں کی پرابلمس, آپ لوگوں کے ایشوز آپ خود سالو کرو گے پوری رسپانسبلٹی کے ساتھ. میرے پاس آپ کے لیے اسپیئر ٹائر نہیں ہے. انڈیپینڈنٹ بنو اور سیلف سفیشینٹ ایڈلٹس بنو. جو اس وقت اس روم میں موجود تھے وہ یہ موم کی اسپیچ سن کے سب اسپیچ لیس ہو گئے, خاموش ہو گئے, اور اس دن سے فیملی جو ہے اچھی طرح فنکشن کرنے لگی. ہم لوگ ایکسٹرا کیئر گیورز بنتے ہیں, ایکسٹرا رسپانسبل سمجھتے ہیں اپنے آپ کو, اور ایز اے مدر, ایز اے وائف اپنے آپ کو ہر چیز فکس کرنے کی طاقت رکھنے والے سمجھتے ہیں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے لوڈ ونس کوئی ڈیفیکلٹ فیس سے جائیں, اسٹرگل کریں, ہم سب کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن یہ احساس کے اندر ہم ساری رسپانسبلٹیز جو ہیں اپنے کندھوں پر لے لیتے ہیں. اور اس سے کیا ہوتا ہے پتہ ہے, اس سے یہ ہوتا ہے کہ پہلے نمبر پر تو آپ کا کنیکشن اللہ عز و جل سے کمزور پڑ جاتا ہے, کیونکہ فزیکلی اینڈ مینٹلی آپ اتنا ڈرین ہو جاتے ہو. دوسرا یہ کہ ہر ایک کا کام ہے کہ وہ خود اپنی رسپانسبلٹیز لے, ایکشن کی, اور اپنے پرابلمس کو سالو کرنے کی پاور رکھیں. اور اگر ان کو وہ قوت حاصل نہیں بھی ہے, ایک حد تک کے ہی آپ ان کو مدد کر سکتے ہو. یو کی ناٹ کل یور سیلف. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیپٹر ہے جو ہمیں ایز اے مدر, ایز اے وائفس, ایز دا لیڈی آف دا ہاؤس سمجھنا ہوگا. I love this part too much and I wanted to discuss it with you all. And Alhamdulillah, we are reaching at the end of the session. کوئی question ہے تو please raise your hand. اگر نہیں ہے تو we will end the session. Anybody's got anything to talk about? Yes, Shabana, please open your mic. Jazakallah khairan Nasreen for sharing this beautiful story. MashaAllah, it's very, very thought-provoking. Inshallah, Allah has to guide us all to learn
all the lessons from this. Ameen. Yes, Jazakallah khair. absolutely. Inshallah, Amin. Yes, ये बहुत important. These are the things how we train our mind. See, कोई भी चीज हम जो कहते हैं ना, we are not by default, we don't possess things. इसे हम कहते हैं experience. इसे हम कहते हैं on the way, on the journey, what we pick up. तो इस तरीके की थोड़ी थोड़ी fine tuning and fine tweaking जो करते हैं ना हम, जो changes लाते हैं positive, उससे बहुत फर्क पड़ता है. तो ये हम लोग को constantly we have to keep on reviving ourselves and changing ourselves for better. और जितना हम इस चीज को रियलाइज कर लेते हैं, बिकॉज देखें, आखिर में हमारा रिश्ता अल्लाह अज़्ज़ा वजल के साथ स्ट्रांग होना है. मैं बार बार रिपीट करती हूँ कि हमारा एटीट्यूड टुवर्ड्स अवर पार्टनर, टुवर्ड्स द स्पाउस, टुवर्ड्स अवर चिल्ड्रन, वो एक्स्ट्रा हमें करने की जरूरत नहीं है जो हमारा काम नहीं है, जिसकी हमें पूछ नहीं होगी, जितनी होगी उतनी ही. कोशिश हम ऐसी करें कि इंडिविजुअली हम अल्लाह अज़्ज़ा वजल के साथ अपना कनेक्शन स्ट्रांग करते रहें, और वो हमको अल्टीमेट पीस देगा और अल्टीमेट विक्ट्री देगा. तो रादर देन फ्रेटिंग एंड गेटिंग इन्वॉल्व्ड एंड गेटिंग स्ट्रेस्ड अननेसेसरी, दैट विल डैमेज अस. उस सर्कल जो है ना, विशियस सर्कल से, उससे बाहर निकलने की कोशिश करें. एंड ऑन दैट नोट, on that note, I would like to end. Inshallah, we will meet soon. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sorry, yes, Nazneen. Yes, Nazneen, tell me. Unmute yourself, please. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This session, today's session really, मेरे लिए इतना अच्छा लगा मुझे, जो आपने जो बात कही, जो अपने महरम का प्रोटेक्शन जो होता है बाजी. I had lost my husband very recently, 5 years back, and I can feel, मुझे वो एहसास है कि वो प्रोटेक्शन कितना इम्पोर्टेंट होता है. और एट द सेम टाइम टुवर्ड्स द एंड जो आपने बात कही कि जो स्ट्रेस हम ले लेते हैं, जो कि मैं फिलहाल कर रही थी, और बेशक वो कनेक्शन जो हो, मतलब अल्लाह सुब्हान व तआला से, वो मेरा टूट रहा था. ये बिल्कुल सच है, ये रियल में होता है. तो बस मुझे यही शेयर करना था कि ऐसे वक्त पे जो ऐसी मजलिसें होती हैं जहाँ पे हम बैठ के दीन की बातें करते हैं, जहाँ पे आप ये सब शेयर करती हैं, वो हमें बहुत मुतासिर करता है. मैं आपको जज़ाकल्लाह खैर बोलना चाहती हूँ इस बात के लिए कि आज की सेशन में मैंने बहुत कुछ मतलब समझा है और बहुत कुछ सीखा है. अल्हम्दुलिल्लाह, 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 अल्हम्दुलिल्लाह. जज़ाकिल्लाह खैर. may Allah Ta'ala make your affairs easy, आपके लिए आसानी करे, because I totally, my heart breaks and reaches out to all those. यानी बहुत difficult है, बिना शौहर के, बिना महरम के, बिना, यानी believe me, आपको हर एक धूप, हर एक मिट्टी लगती है. यानी वो एक बंदा आपके सामने है जिसको आप हम कदर नहीं करते. हमें लगता है हाँ ओके, ये हम हमेशा कंप्लेन करते हैं, ना शुक्रापना कर रहे होते हैं, लेकिन ट्रस्ट में जिनके पास नहीं है उनसे पूछें. तो अल्लाह ताला जिनके हैं शौहर, मैं उनको यही सलाह दूंगी कि इसकी कदर करें. और दूसरा ये कि जिनके पास नहीं है, डोंट वरी, अल्लाह ताला विल मेक अरेंजमेंट फॉर यू, बट अपना कनेक्शन अल्लाह अज़्ज़ा वजल के साथ स्ट्रांग करते रहें. बस अपनी पहचान, अपनी एक जिंदगी को मत छोड़िए, अपना एक परसेप्शन रखिए, अपनी एक पर्सनालिटी रखिए, अपने आप को घुल मिल के अपने आप को तबाह ना करें, क्योंकि ना आपको दुनिया में कुछ मिलता है ना आखिरा में मिलता है. इसीलिए अल्लाह से जुड़ें. जितना अल्लाह से जुड़ेंगे, ही विल मेक यू मोर लाइटर, मोर फर्मर, मोर स्ट्रॉन्गर, और आपको एक सकीनत उतरेगी इंशाअल्लाह ताला. तो सुभान अल्लाह, वेरी वेरी नाइस टू हियर पर्सनल स्टोरीज. जब हम देखते हैं ना कि हमारी लाइफ में इन चीजों का असर पड़ रहा है, ये 1 घंटा या 45 मिनट्स जो हम देते हैं, लेकिन इट इज लाइक अ रिचार्ज फॉर अस. सुभान अल्लाह. तो ये सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा. इनफैक्ट मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि अभी हमारी बस फ्यू सेशन है, ये किताब भी हमारी खत्म होने वाली है. मैं कोशिश इंशाल्लाह कर रही हूँ कि इसके बाद वो जो तरतीब है उसी हिसाब से चलूं. आई वांट टू कंप्लीट उस्मान रदियल्लाहु अन्हु's बायोग्राफी एंड अली रदियल्लाहु अन्हु's बायोग्राफी एज वेल. तो इंशाल्लाह कोशिश करती हूँ कि मैं वो भी किताब जो है ऑब्टेन करूँ, बिकॉज मेरे पास हार्ड बाउंड कॉपी नहीं है, बट आई विल ट्राई टू गेट इट इंशाल्लाह सून. एंड ये सिलसिला जब तक हयाती है, जिंदगी है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि चलता रहे. तो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.